Okay, so we are going to talk about a few more modals. Now I've written shall. Shall is part of Old English. Shall and will were counterparts, synonyms. जब भी हम इंटेंशन की बात करते हैं, फ्यूचर का, भविष्य के इंटेंशन, इरादे की बात करते हैं, तो शैल और विल यूज होता है. एंड एज पर द क्वींस इंग्लिश, व्हेन आई से क्वींस इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश के रूल के हिसाब से, एंड आई हैव रिटन ओल्ड इंग्लिश बिकॉज इन मॉडर्न वर्ल्ड वी यूज विल फॉर एवरीथिंग. जब भी हम इंटेंशन की बात करें, डजेंट मैटर आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कौन सा प्रोनाउन यूज करें, हम विल यूज करते हैं. पर इन द ओल्ड इंग्लिश शैल वाज यूज्ड विद आई एंड वी. जब हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की इंटेंशन की बात करें. In modern English, shall is used for permission. Okay? Let's talk about should. Now, यहाँ पे थोड़ा complicated होता है. Carefully सुनो. Should is used for advice. Advice यानी सलाह. Suggestion यानी सुझाव. Recommendation, I don't know what it is in Hindi. But do we know the difference between suggestion and recommendation? क्या फर्क है इसमें दोनों? Suggestion मतलब किसी को सुझाव देना. Okay. राय दे रहे हैं अपन किसी को. कुछ point उसको ऐड करके दे रहे हैं. और recommendation advice हो गया ना? सजेशन भी वही है. नहीं, it's not the same. Advice देना, सलाह देना हो गया. हाँ. Correct. For example, my daughter. Now, obviously, I have more experience than her. All of us have more experience than our children. Not yet, but in the future. Now, when the kids come to ask for some advice, ये हो गया noun. Advice, noun. सुझाव के लिए आ रहे हैं, ठीक है? Sorry, सलाह के लिए आ रहे हैं. What I do, what I give is advise. So advise, this is noun. Advise, not ce, but se is the verb, क्रिया है. सुझाव देना, सलाह देना is advise. सुझाव जो बता रहे हो आप, not the act of giving, but the advice, whatever information you give, that's advice. Noun. ये abstract noun है, ये verb है. Understood the difference? Why the spelling is different? इसको advice पढ़ेंगे, इसको advice पढ़ेंगे. Now, whenever you're giving advice to someone, आप should use करते हो. You should do this. We should do this. They should do this. For example, I tell all my students, you should practice daily. When you practice daily, you will improve in your language. Make your own sentences. The more sentences you make on your own, you will get better at it. Okay? Suggestion and recommendation का फर्क है. Now the pronunciation of this word, notice कीजिए मैंने क्या बोला, suggestion, chin, because it ends with S-T-I-O-N. Recommendation, वहाँ पे shin आया, because the spelling ends with A-T-I-O-N. Now suggestion और recommendation में simple ये फर्क है. आप लोग मेरे students हो, you all are coming to class, you know exactly how I train. मेरा method क्या है, मेरा explanation कितना detailed जाता है. I give you time to practice. We have practice papers. Falana, falana. Now, if you go ahead and tell someone, why don't you join Book It? आप बोलते हो उनको मेरी classes join है, जिसका नाम है Book It. So if you ask someone to join Book It, you're recommending my class. Right. Because you have first-hand experience. Okay? Suggestion is, आपको पता नहीं मैं कैसे पढ़ाती हूँ. आपको पता है यहाँ पे classes है, आपने बोर्ड देखा, आपको पता चला कहाँ से कहीं से सुना कि उमंग होम्स में क्लासेस है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, पूरे IB स्ट्रीट में एक ही है. आप जाके किसी को कोई पूछता है कि यार मैं इंग्लिश क्लासेस ढूंढा हूँ, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, या तो फिर कोई बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ. आप बोलते हो अरे मैंने क्लासेस देखा है उमंग होम्स में, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते. यू आर सजेस्टिंग. यू डोंट नो हाउ आई एम एज अ ट्रेनर. पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, बस देखा है, नाम देखा, बोल दिया, सजेस्शन. Personal experience, recommendation. Do we understand the difference now? Right. Yeah, so whenever we give advice to someone, we are suggesting, or when we are making any recommendation, we will use should. Clear everybody? Thoda sa open the door because it's getting a little stuffy. Okay, let's move to has, have. Has and have both talk about ownership. आपके पास कुछ होना, आप हक जता दो चीजों पे. चीज हो, इंसान हो, जगह हो, जानवर हो, थॉट्स हो. This is my chair. This is my classroom. यहाँ पे मैंने हक जताया. अभी ये my और mine भी ओनरशिप बता रहा है. पर I have, I के साथ I, you, we, they and plural nouns. Okay? We'll use have. He, she, it और singular nouns के लिए we'll use has when we are talking about ownership. I have a dog.
We have had a lot of pets. हमारे पास बहुत pets रह चुके हैं. He has a dog. एक क्वेश्चन था, बोलिए. हम लोगों ने जब नाउन किया था तो उस टाइम पे आई को हम लोगों ने सिंगुलर में डाला था ना? हाँ जी, Exactly, मुझे एक तो- कॉमा है. I सिंगुलर हाँ और खुद के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हाँ प्रोनाउन. हाँ यहाँ ये nouns लिखा है, वो प्रोनाउन है. Plural nouns का मतलब है, for example, instead of using we, I use the words, names. Avni, my father and I. तो have लगेगा. Avni, father का नाम मैं नहीं लूँगी ना. Okay, let's say Pauline, Deepika and myself have been friends for 20 years. Pauline, Deepika and myself have been friends for 20 years. मैंने दूसरों का नाम लिया प्लस मेरा, तो plural nouns, got it? और सिंगुलर नाउन है ना, he she की जगह पे कोई नाम लिखा है. So Simba has a lot of toys. Simba, singular noun, has a lot of toys. Simba, he has a lot of toys. Understood now? Right. So ownership का clear हो गया. Let's talk about the other points. Have also means to eat or to drink. I have my breakfast by 8 a.m. 9 a.m. का मेरा पहला क्लास है. I have my breakfast by 8 a.m. I don't have a lot of tea. मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती. पहले बहुत पीती, like crazy amount of tea. So have can be used for eat and drink. Have is also used for necessity. I have to drink water. मुझे पानी पीना बहुत ज़रूरी है. Necessity की बात है. Human beings have to take care of their health so that they can live long lives. Right. Or human beings should exercise. We should exercise. Advice. As well as suggestion, as well as recommended. Exercise तो हम लोग सबने थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, right? Are we clear with eat, drink, necessity, ownership? Any questions on this? All three of you, Anurag, clear? Okay. Let's talk about the last point here. Used to. When we talk about any habitual things that we did in the past, और आपने एक बार नहीं किया, आप करते रहे, आदी थे आप उसके, आपको हैबिट थी, आदत थी वो करने की, आप यूज टू यूज करोगे. As a youngster, until I got married, I was into martial arts, dancing, riding the bicycle, walking. I would walk. So I was born and raised in a place called Worli. Worli से गेटवे ऑफ इंडिया तक मैं चल के जाती थी. समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन. You know the distance, right? आप बॉम्बे रह चुके हो. Do you know बॉम्बे? No. काफी दूर है. Okay? It would take me almost 2.5-3 hours to reach चल के, और speed, brisk walking. I was very very skinny those days. तो मेरा स्कूल का फ्रेंड और मैं, हम लोग दोनों we used to pair up and we used to go walking, या तो we used to go riding a bicycle. Used to क्यों बोला? क्योंकि ये मैं किया करती थी. अभी नहीं करती हूँ. अभी टाइम ही नहीं होता. So habit from the past. Any action that you did in the past. Present tense में आप कुछ करते हो, जैसे कि राखी teaches English. राखी इंग्लिश पढ़ाती है. ये मेरा रूटीन है. 6 days a week I teach, right? तो ये हैबिट है पर करंट है. I used to work as a sales girl. मैं सेल्स गर्ल की नौकरी किया करती थी. तो I used to work as a sales girl. This is during college. I don't know how many years. 18, 19, 20, 21, 22. Almost 3-4 years. I used to work as a sales girl. तो वो तभी, it's not about only hobbies. It could be work. It could be any action that you were habitually doing. Clear everything? Yes. Yeah. Please make your examples, and then we will check the examples and.